Look, if fiscal deficit is high, it leads to inflation. तो fiscal deficit high है, इसका मतलब government is spending more, right? Government is spending more, so because of fiscal deficit, liquidity would increase. Liquidity increases, which leads to increase in inflation. Nominal interest rate रियल इंटरेस्ट रेट. इससे पहले दो नॉमिनल रियल चीजें की हैं. क्या क्या? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट. ये तीसरा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है. सपोज आई हैव 20 रुपीज विद मी. ये 20 रुपीज मैंने यहाँ रख दिए. ठीक है. और 20 रुपीज का एक एप्पल आता है. ठीक है. तो in the year 2024, the price of one apple is equal to 20 rupees. ठीक है. तो मेरे पास 20 रुपीज है. आई हैव अ ऑप्शन, आई कैन बाय एन एप्पल. मैं नहीं करता. ठीक है. आई कीप दिस 20 रुपीज हेयर ओनली. यहाँ पर रख दिया. नेक्स्ट ईयर 15 मार्च को आता हूँ, तो ये 20 रुपीज कितने हो जाएंगे? फिर 20 रहेंगे. तो नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर आई वुड स्टिल हैव 20 rupees cash with me, right? But next year what happens? Price of the same apple, it becomes 25. ठीक है. So this year I can buy an apple with 20 rupees. Next year with this 20 rupees I cannot buy this apple. सही है ना? So can I say कि hence we can conclude that cash loses its value over a period of time. ठीक है ना? कैश लूजेस इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. चले आगे. तो मेरे को पता है कैश विल लूज इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए मैं क्या करता हूँ? आई डिपॉजिट माई मनी इन अ बैंक. तो व्हाट हैपन्स? अब मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ. व्हाट आई डू? इन द ईयर 2024 आई गो टू अ बैंक एंड आई डिपॉजिट say 100 rupees. At 6% rate of interest for a period of 1 year. ठीक है. And next year the bank would be returning me
106 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 6% रिटर्न, this 6% interest rate which the bank is giving me, this is the nominal interest rate. This is the nominal interest rate, ठीक है। And in the year 2023, price of one apple it is 100 रुपीज। तो 2024 में मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो एप्पल खा लूं या फिर पैसा बैंक में डाल दूं। मैं सोचता हूं कि यार पैसा बैंक में डालते हैं, नेक्स्ट ईयर 106 मिलेगा, 106 मिलेगा, उससे एप्पल खाएंगे और 6 रुपए का समोसा भी खाएंगे। प्लानिंग चालू होती, ठीक। तो आई डिपॉजिट दिस मनी इन द बैंक। नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंस, प्राइस ऑफ द सेम एप्पल it becomes 104, ठीक है। So now what do we have? We have an inflation of 4%, right? Inflation of 4%. So I was assuming I would be earning 6%, right? But don't you think by putting money in the bank, I am earning actually 2 rupees? Bank would be returning me 106, right? Out of that 106, I won't be able to buy the apple for 100 rupees. I would pay 104 rupees for the apple, and I would be instead saving just 2 rupees, right? And hence comes into picture the concept which is real interest rate. So real interest rate क्या है? It is nominal interest rate minus inflation rate. Nominal interest rate minus inflation rate. तो इस केस के अंदर how much is the real interest rate? It is 6% minus 4% equal to 2%. Is it okay? This is case 1. This is case 1. Case 2 is, say, inflation, or rather say the price of same apple it becomes 109, ठीक है। So in this case I have an inflation of 9%. In this case real interest rate becomes negative, ठीक है, सही है। Therefore we can write that during periods of high inflation, real interest rate becomes negative.
ठीक है, सही है। सो व्हेन रियल इंटरेस्ट रेट बिकम्स नेगेटिव, is it good for me that I deposit money in the bank? No. So I can write. अच्छा, एक और बात, इस केस के अंदर, द केस बिलो द ग्रीन लाइन, इस केस के अंदर हु इज द क्रेडिटर, द बैंक और द पर्सन? क्रेडिटर कौन है? द पर्सन इज द क्रेडिटर, राइट? तो ये है क्रेडिटर, ये है डेटर, ठीक है। कैन आई राइट दैट इन्फ्लेशन hurts the creditor, right? And inflation helps the debtor, सही है। And obviously opposite of this for deflation, तो deflation क्या करेगा? Deflation helps creditors, right? Deflation helps creditors and deflation hurts the creditor, hurts the debtor. Is it okay? Opposite हो जाएगा, लिखवा ही देता कि deflation helps creditor and deflation hurts the debtor. Is it okay? चले आगे। हाँ जी, बताइए। Fiscal deficit goes up, liquidity goes up, inflation goes up, inflation goes up, hence real interest rate goes down, सही है। Real interest rate goes down, what would people do? ये बनाओगे ना तो भाई इसके ऊपर स्पेस खाली छोड़ना, ये स्पेस खाली चाहिए। तीन अलग ऐसे और होंगे भाई साहब ना। चार डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट के लिए बोले थे, अभी एक ही आया है तो प्रीलिम्स का है ना ये प्रीलिम्स का है, उनको बोले तीन ऐसे और हैं, ठीक है। ये घर पर जाके देख लीजिएगा, उसके हिसाब से तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो आओ। सो
real interest rate goes down, people will withdraw deposits from the banks. And after withdrawing deposits from the bank, what would they do? क्या करेंगे पैसे का? बिल्कुल, ये नहीं है कि मेरी सेविंग्स है, बैंक में रिटर्न कम मिल रहा है, बाहर निकाले खर्च लो, ऐसा नहीं होता है। हम उसको वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां रिटर्न बेटर मिल रहा है, तो उस टाइम रिटर्न कहाँ बेटर मिलेगा? मार्केट एक ऑप्शन है, बट अगेन इफ वी टॉक अबाउट मार्केट्स, हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट? बिकॉज व्हेन वी से मार्केट, इट मींस वी, मींस हम लोग इन्वेस्ट कर दें। हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी में पीपल, हु आर पीपल? वी आर द पीपल, राइट? तो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। पीपल हार्डली इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। वेयर डू दे इन्वेस्ट? गोल्ड। व्हाट वुड पीपल डू? People would buy gold. And when people would buy gold, what happens to gold imports? ठीक है? If gold import increases, what happens to rupees value? Rupee depreciates. Rupee depreciate होगा तो क्या होगा? Price of crude oil increases. In rupee terms. कोई बात नहीं, एक साथ दे दें जो होगा, ठीक है? प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीजेस इन रूपी टर्म्स, राइट? उससे क्या होगा? देयर वुड बी इंक्रीज in diesel price. Increase in diesel price, so cost of production and cost of transportation increases, which further leads to inflation. Is it okay? गोल्ड का इंपोर्ट होगा तो रुपए का तो आउटपुट, डॉलर का तो आउटफ्लो होगा, डॉलर आउटफ्लो होगा तो रुपया डेप्रिशिएट ही होगा, ठीक है? देन ये कनेक्शन सबको समझ में आ रहा है? देन if inflation goes up, what would RBI do with interest rates? Interest rates increased to reduce inflation. Interest rates would be increased to bring down inflation. उससे क्या होगा? What happens to credit offtake? कम हो जाएगा। क्रेडिट ऑफटेक क्या होता है? टोटल लोन्स टेकन फ्रॉम द बैंक, क्रेडिट ऑफटेक। तो क्रेडिट ऑफटेक गोज डाउन, what happens to private investment? Goes down. Private investment goes down,
what happens to economic growth? Goes down. What happens to tax collection? Goes down. Tax collection goes down. What happens to revenue receipts? Okay. Fiscal deficit goes up. What happens to public debt? Fiscal deficit goes up. What happens to public debt? Public debt goes up. Public debt goes up. What happens to credit ratings? Goes down. Credit rating goes down. What happens to rate of interest on government borrowings? हाँ जी, increase. सही है? If this increases, what happens to interest payments? Increase. Interest payment increases. What happens to revenue expenditure? Is it okay? नहीं या सही है या रिपीट है? ओके. Credit ratings go down. What happens to FPI? Outflow. FPI outflow से क्या होगा? Rupee depreciates. Can you all understand all the interconnections? सही है? So all of them are actually drawbacks of high fiscal deficit only. ठीक है? We have interconnected the things, but all interconnections are drawbacks of high fiscal deficit. कि पब्लिक डेट बढ़ेगा, रेटिंग्स ऊपर बढ़ रेटिंग्स नीचे आ जाएंगी, एफपीआई आउटफ्लो होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, टैक्स कलेक्शन कम होगा, ऑल दोस्त. ठीक है?